Hi, good morning and welcome to the class. And we are talking about this topic. Yeah, we are talking about the FATF and India. Recently, this is in the news, and we have to see about the context of this topic, right? So, welcome to the GK class. I am Ved Prakash here, and so we are doing in the class regarding the Financial Action Task Force, right? और उसके अंदर जो इंडियन कंटेक्स्ट है, क्या नया डेवलपमेंट्स हुआ है इसके अंदर, क्या प्रोसेसेस है, इसके बारे में हम क्विक रिकैप देखते हैं इस क्लास में. So going further on that part, whenever we are talking about the FATF, FATF is something called Financial Action Task Force. क्या है ये? नाम से क्लियर है, Financial Action Task Force, right? It's a global money laundering, right? The new term we have to introduce here, that is money laundering, right? मतलब जहाँ पे क्या होता है, मनी को हम लॉन्ड्री करते हैं. लॉन्ड्री का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी को हम लोग व्हाइट करते हैं बेसिकली. सो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग, वो जनरली रेगुलेट करती है, वो जनरली देखती है कंट्रीज के थ्रू किस तरह से फाइनेंशियल फंडिंग हो रहा है फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटेड कंसर्न्स ऑन दैट, राइट. दिस सेट्स द इंटरनेशनल नॉर्म्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. जो ये जो इलीगल एक्टिविटीज को जो फंडिंग होती है वर्ल्ड वाइड, सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फंडिंग एंड दे हार्म टू द सोसाइटी. व्हाट द हार्म मतलब, वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. एज द नेम सेज, see the intergovernmental bodies which aims to regulate all the types of funding in the world through the terrorist funding, because the main point of terrorist activities that they are getting funding from the countries. So this was basically formed in order to regulate, in order to control all these types of you can say activities or investment across the world, right? So moving further about on this part, these are some facts about that one. Formation in 1989 में ये फॉर्म हुआ, right? This is headquarter in the Paris, which is the official building of Organization of Economic Cooperation and Development, right? कहाँ बना ये? OECD के हेडक्वार्टर में. OECD का मतलब क्या हुआ? Organization for Economic Cooperation and Development. It was founded in 1989. What is the nature of the organization? The intergovernmental organization. क्या organization है ये? Intergovernmental organizations है. Got it? And what is the purpose? We already have discussed that combat money laundering and terror funding. जो terrorist funding होती है, या there are lots of things are there as per the international criminal code report जो भी कुछ टाइम पहले आया था. We have seen that there are lots of the funding by the different countries are there. So the main purpose of this particular organization is to provide a check on the different countries, right? And through that part. हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में. जो मेन क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द FATF? इट्स इन पेरिस. सो इनिशियली इट वाज फॉर्म टू सर्व द यूरोप, बट लैटरली it was extended to the multiple countries. Non-European countries are also there. As of now, there are the 39 member countries are in the FATF. कितने countries हैं? 39 countries are there, right? पहले इसमें 14 countries थे और सब countries add होते चले गए. So presently it has 39 countries, right? 39 countries are there. तो FATF की जो reports है, जो way है, the different committees are there. They are working for these 39 countries, right? Official language जो found हुआ था उस time से, they have the English and the French. These are some basic facts जिससे हमारे questions बनते हैं इसमें. So we are moving to the next part. That is FATF. FATF control कैसे करता है अपने members को? तो अपने members को वो basically दो type की listing बनाती है. First is called grey list, other is called black list. Right? Two types of country. कोई भी अगर suspicious transactions है, suspicious concerns है, तो they put the country into the grey list. कुछ particular time मिलता है, they have given the communication regarding that. Country has to frame their policies, country has to work on these types of fundings, everything on that one. तो कुछ time के बाद कोई पर्टिकुलर कंट्री को हम लोग ग्रे लिस्ट से हटाकर FATF क्या करता है? ग्रे लिस्ट से रिमूव करके दे पुट इन द सम डिफरेंट लिस्ट, वी कैन से. सो द ग्रे लिस्ट इंक्लूड्स कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग, राइट? जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के लिए जो सपोर्ट करता है पर्टिकुलरली. सो इन दैट पार्ट विल टॉक अबाउट दैट कंट्रीज, राइट? सो इट्स अ वार्निंग फॉर द कंट्री, लाइक टू इंटर ब्लैक लिस्ट. तो ग्रे लिस्ट पहले इंट्रोड्यूस होती है, कंट्री के लिए वार्निंग होती है. इफ दे आर नॉट फॉलोइंग दैट वन, दैट कंट्री शुड बी कवर्ड इन द ब्लैक लिस्ट. सो व्हाट आर द ब्लैक लिस्ट? एज द नेम सेज, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज. ऐसे कंट्रीज और टेरिटरीज
they are not in sync with the recommendation of the FATF, जो उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उसके रिकमेंडेशन है, जो उसकी डिमांड है, हाउ द कंट्रीज एंड द फाइनेंशियल फ्लो शुड बी देयर, तो वो उसको कवर नहीं कर पाता है, राइट? दैट सपोर्ट टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग. सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन डिफरेंट कंट्रीज. अब क्रिमिनल एक्टिविटीज को डिफाइन करने के लिए वी हैव द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डिफाइन करती है. एज ऑफ नाउ ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, ये तीन जो कंट्रीज है वर्ल्ड के, दे आर द ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज. गॉट इट? आई एम अगेन रिपीटिंग द नेम. ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार, दीज आर थ्री ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज के अंदर आता है. इसके अंदर वो मूविंग फर्दर, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, क्या होगा अगर कोई कंट्री इस लिस्ट में आती है? तो फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक सैंक्शन. उसके ऊपर हम लोग इकोनॉमिकली रूप से बैन करते हैं, सैंक्शंस लगाते हैं. दे कुड नॉट ट्रेड इन दैट एरिया. जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जो पॉइंट्स हैं, वी रिमूव दैट पर्टिकुलर पॉइंट. जो सब्सिडी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द सब्सिडी फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. सो वी आर जस्ट रिमूविंग दैट सैंक्शंस, राइट? प्रॉब्लम इन गेटिंग लोन्स. इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हमारे पास, जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक हो गया, वी कैन से एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है, जितने भी इस तरह के फाइनेंशियल फंडिंग्स है, दे आर नॉट गेटिंग दैट पार्ट, राइट? So they have the bad rating for that country. Ultimately, they find the problem in getting the loans. Third point क्या हमारे पास, reduction in international trade. I have told you, जो import subsidy है, import quotas है, export subsidies है, या free trade agreement का जो concerns है, इन सबको क्या कर दिया गया? हटा दिया जाता है. Ultimately, they find the problem in international trade. They does not find that volume, जो trade volume है, या आप कह सकते हो फॉरेन एक्सचेंज का जो फ्लो होता है, दैट आल्सो प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल दिस कंसर्न्स, राइट? सो रिडक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर. मेंबर्स, we already discussed there are 39 membered body representing the most major financial centers in all parts of the globe. Most member centers are there. इसमें two bodies भी है, European Commission and Gulf Cooperation Councils. These are present on that. These are the list of observers. Indonesia is the only observer. They are not getting the member status. Rather than they are present in the meeting, they recommendations they are giving on that. कुछ important organizations that have observer status. We have seen the list: ADB, IMF, OECD, ONODC, WCO, right? World Bank also. So these are the list of some observer countries which plays a important role in that case, right? Challenges क्या है FATF को लेकर? डोमेस्टिक कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स हो रही है. दे कुड नॉट कोऑर्डिनेट विद द कंट्री. जो रूल्स रेगुलेशन फ्रेम होते हैं, देयर इज समथिंग डिफरेंट. कैपेसिटी कांस्टेंट है कंट्रीज को लेकर. दे आर नॉट सो कंसर्न ऑन दैट. इनएडेक्वेट ऑपरेशनल रिसोर्सेज आर देयर. दे आर नॉट सो इक्विप्ड विद द रिसोर्सेज. असेसमेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग की जो रेगुलेशंस है, they are not aware of that one. Or inability to adequately identify, assess and mitigate the risk. These are some of the areas in which they are कंसर्न है. इंडिया का क्या प्रॉब्लम है? रिसेंटली न्यूज आई थी, इंडिया को पुट किया गया इन द बेसिकली लिस्ट ऑफ दैट पार्ट, राइट? तो इंडिया हैड आल्सो ज्वाइन. बहुत सारे ऐसे चीजें इंडिया ने किया था, एंड अल्टीमेटली दे आर कमिंग ऑन दैट. वी हैव द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट. ये सब कुछ ऐसे रेगुलेशन थे जो हमने स्टार्ट किया था. वी हैव एक्टिविटीज, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, एवरीथिंग वी हैव डन ऑन दिस पार्ट, राइट? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में थोड़ा पढ़ ले. क्या होता है ये? मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है जो हम किसी भी तरीके के ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, या कोई भी मनी के फ्लो को कंट्रोल करते हुए हैव. सो अल्टीमेटली वी हैव ऑल द कंसर्न्स ऑन दैट, राइट? आई होप यू हैव एंजॉयड द क्लास. थैंक यू वेरी मच.